नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह। आई एम अ सीनियर रिसर्च फेलो फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर और मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूं हमारी सीटेट की तैयारी के लिए। सीटेट का ये जो एग्ज़ाम है वो हम टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम पहले जानेंगे कि सीटेट का ये जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज पूछे जाते हैं और कैसे उसका मार्क्स डिवीजन हुआ है। So, coming to the important things that are essential for us to know in order to attempt the CTET paper 1 and as well as CTET paper 2. So, the very first thing that we can see here on our slide, CTET paper 1, which is for classes 1st to 5th, the subject areas are divided under 5 categories: child development and pedagogy, which is for 30 marks, language 1, that is for 30 marks, language 2, 30 marks, and the fourth topic is about mathematics, and the fifth subject area would be environmental studies, EVS. ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेकिंग द टोटल टू 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स। और ये सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं हमें अटेम्प्ट करना। ऑल द क्वेश्चंस विल हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हमारे एग्ज़ाम में। मूविंग ऑन टू पेपर 2, ये जो पेपर 2 है ये क्लासेस 6 to 8 के टीचर्स के लिए है। तो जब आप पेपर 2 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें हमारे सब्जेक्ट एरियाज हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि कंपलसरी है 30 मार्क्स के लिए। नंबर 2, दैट इज़ लैंग्वेज 1, ये भी कंपलसरी है फॉर 30 मार्क्स। Then third one, that is language 2, that is for 30 marks. This is also a compulsory paper. The fourth one, that is subject specific. So हमारे जो मैथ्स और साइंस के टीचर्स हैं उनको उनका सब्जेक्ट का पार्ट अटेंड करना है और जो हमारे सोशल साइंस के टीचर्स हैं उनको वो वाला पार्ट अटेंड करना है। तो ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट होगा इसमें होंगे टोटल 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 60 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस based on the subject area that you are from or whatever is your expertise, what you have based on what subject area you have expertise in and what you have chosen for your exam, you have to attend that one. So in the paper 2 also we will have 150 marks and total 150 questions. Each question will carry 1 mark and you should remember that all of the questions are compulsory. Now, in today's discussion, we will be talking more about the language section, which for our goodness is the same for paper 1 and paper 2. The syllabus for languages is the same in both the papers. So that is a very good thing for us. While we are preparing for languages, we can go through the syllabus and the same things are just differentiated in the level of difficulty when it comes to paper 1 and paper 2. So language 1 and language 2 are two choices that we have. We have to decide what is our preference, which language we want to give as language 1 and which language we want to choose as language 2. It can be English, it can also be a regional language or your mother tongue which you would like to choose from the options given to you when you are applying for the CTET examination. So making sure, as you can see here, the languages part is considering almost 60 marks, which is the 40% of both of our paper 1 and also 40% of paper 2. So keeping all of this in mind, we have to make sure that we have a strong command on both the subjects language 1 and also language 2. तो अब हम चलेंगे हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे सिलेबस में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और अच्छी बात ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है उन दोनों में ही ये टॉपिक है और हमारे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों के लिए ही ये यूज़फुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड लैंग्वेज थियोरिस्ट जो उन्होंने बोला है लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारी तैयारी सीटेट की आगे कैसे बढ़ती है।
तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो कि हमारे टीचर्स को ऑलरेडी पहले पता है, बट टू गिव देम फ्यू की वर्ड्स विच विल हेल्प देम while they are attempting the CTET examination. Learning is a process of acquiring new skills or knowledge and improving the existing skills also. So, हमारे पास कुछ skills already हैं और हमारी कुछ स्किल्स हैं जो हम नया सीखेंगे, हम या सीखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, जो हमारे लोग हैं आसपास उनसे, या फिर हमारे स्कूलों में, या फिर हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस में। तो लर्निंग हम दोनों को ही कहते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हम सीखेंगे वो है, तो हमारी जो अभी की स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना और नए स्किल्स को हमारे स्किल सेट में जोड़ना, दोनों को ही लर्निंग कहा जाएगा। एक और चीज़ जो हमें इम्पॉर्टेंट है समझना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कॉन्सेप्ट हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन पोर्शन में भी देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सबका लर्निंग का जो पेस है वो अलग है। सो द पेस ऑफ लर्निंग इट चेंजेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, एंड ऑल्सो उनका जो बिहेवियर है उस पर भी डिपेंड करेगा। उनका अकाउंट ऑफ लर्निंग, हम कितना सीखते हैं, वो मेरा और मेरी फ्रेंड का, या मेरा या मेरे स्टूडेंट्स का, मेरा या मेरे कलीग का, सबका लर्निंग का जो ये प्रोसेस है वो डिफरेंट लेवल पर है, सबका पेस अलग है। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। So there are four major factors we can say. The first one is the environment, second being learners' ability and motivation, third teachers' capabilities, and the fourth ways of imparting knowledge. So when it comes to the environment, so the environment in which we are present, वो हमें किस हद तक मदद करता है लैंग्वेज सीखने में या कुछ भी लर्निंग करने में, ये उसके बारे में बात कर रहा है। सेकेंड वाला जो हमारा पार्ट है, लर्नर्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे अंदर, लर्नर के अंदर एक चाह होनी चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, विच इज़ वॉट इज़ लर्नर्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन। द मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक, इट कैन बी एक्सट्रिंसिक। ये आप सब ऑलरेडी जानते होंगे। एक क्विक रिकैप करने के लिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो अंदरूनी होता है, जो हमारे अंदर कुछ विल पावर है, हमें खुद से मोटिवेशन के लिए हमारे अपने रीजंस हैं। एक्सट्रिंसिक वो होता है जो बाहरी रूप से हमें मोटिवेट करते हैं चीज़ें, जैसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है मेरी चाह, मैं ये सीखना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बी दैट एडेड वैल्यूज़ और एडेड थिंग्स दैट वी विल बी गेटिंग, एज इन एक अच्छी जॉब, हायर सैलरी, ये सारी चीज़ें हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी बोल सकते हैं। कमिंग टू टीचर्स कैपेबिलिटीज़, सो हमारे टीचर कितने कैपेबल है, कितने अच्छे से क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, कौन से अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, वो उनके स्टूडेंट्स के लिए कितना अप्रोप्रिएट है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे लर्निंग को भी अफेक्ट करते हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज लर्निंग को भी अफेक्ट करते हैं। तो फोर्थ वाला जो हमारा फैक्टर है वो है वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। तो हम किस तरीके से नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, हम लेक्चर मेथड में कर रहे हैं, हम डिस्कशन मेथड में कर रहे हैं, इज़ इट अ 1-to-1 इंटरेक्शन, इज़ इट 1-to-all इंटरेक्शन, इसके बेसिस पे भी लर्निंग, उसका स्पीड, कितने अच्छे से कौन सीखेगा, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज लर्निंग इज़ अबाउट द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। ये जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ आर द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. It is a period where language develops readily and naturally. After this period is over, language acquisition becomes much more difficult and it is less successful when compared to it happening in the early years. तो ये जो हमारा critical period hypothesis है, ये इस बारे में बात कर रहा है कि जितना बचपन से, जितने छोटे उम्र से हम बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सपोज करेंगे, उतना ईजिली बच्चे वो लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो जो हमारे बच्चे ये किस तरीके से लैंग्वेजेस को सीखेंगे, कितने अच्छे से सीखेंगे, ये डिपेंड करता है उनके उम्र पर भी कुछ हद तक। जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे आते हैं, उनका सीखने का पेस, जब फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस पे जाते हैं एंड एज दे मूव टू प्यूबर्टी, एडोलेसेंस,
ग्रुप एंड देन टू अडल्टहुड, स्लोली हमारा लैंग्वेज सीखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया गया है कि 85% of the total child's brain development happens in the early years of their life. That is why foundational stage becomes very important. So when it comes to language learning, we can see this critical period hypothesis is also talking about something similar. It is having ties with what we have spoken in our policy. तो अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब बच्चा इस उम्र में जल्दी सीखना शुरू करेगा लैंग्वेजेस को, जितना जल्दी हम लैंग्वेज सिखाना शुरू करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा फाउंडेशन होगा लैंग्वेजेस के लिए। तो हमारे की टेक अवेज इस पार्ट से ये होंगे कि अर्ली चाइल्डहुड बेस्ट टाइम है बच्चों के लिए लैंग्वेज को नेचुरली डेवलप करने के लिए। जितना अर्ली हमारा एक्सपोजर होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लर्निंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है एंड हम लोग थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं, तो हमारा लैंग्वेज सीखना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, कुछ फैक्टर्स जो हमारे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाएंगे तो ये सर्टेन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें। अब हमने देख चुका है लर्निंग क्या होता है, तो अब हम मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ लर्निंग। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग: मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ये मैंने सीटेड का जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से बनाया है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोटर लर्निंग क्या होगा। मोटर इन द वेरी वर्ड इट टॉक्स अबाउट मूवमेंट. It is about the activities which require us to use our physical strength or also physical mobility to see and learn through that. So most of our activities during the day are motor activities. It can be fine motor activities, gross motor activities, which include writing, scribbling, gross motor activities and fine motor activities, which includes writing, drawing, sketching, and also activities like walking, running, driving, climbing, jumping, etc. ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ है इसमें आपको मसल का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस के बेसिस पर। तो लैंग्वेज में व्हेन इट टॉक अबाउट मोटर लर्निंग, it is talking about writing of the letters correctly. It is talking about the hand movements while we are writing. And it is also talking about articulating the sounds and words in the right way. So what these motor learning activities will do to us is, it will help in writing, it will help in developing proper pronunciation, and also how to use our speech organs properly. So this is how it will help us. Now moving on to the next part, which is the verbal learning. This type of learning involves the language we speak, the communication methods we adopt, and these communication methods can be anything. It can be signs, pictures, symbols, words, sounds, etc. These are all the tools जिसके बेसिस पर हम एक्टिविटीज़ हमारे क्लासरूम में बनाते हैं और ये हमें हेल्प करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अमंग आवर लर्नर्स। तो व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस, एज यू कैन सी हियर, देयर इज लिसनिंग टू स्टोरीज एंड कॉन्वर्जेशन, speaking words and forming sentences, reading words, signs, labels and pictures, understanding meanings of the words. What will all these activities do? This will help us to build vocabulary. It will also improve our communication and also how we express our emotions, or also the fact how we actually talk to each other. So ये सारी चीज़ें हमारे लैंग्वेज वर्बल लर्निंग डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जो तीसरा पार्ट है लैंग्वेज लर्निंग का वो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल, बाय द वर्ड इटसेल्फ वी अंडरस्टैंड दैट दिस हैपन्स टू बी एट अ हायर लेवल। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग. So what we do, we take something and then we try to understand it. We try to make connections. We will do certain comparison and then we reason out why this has happened. So these kind of activities is what we have to plan when it comes to conceptual learning.
कुछ एग्जाम्पल्स हम इस तरह से ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड आइडियाज इन अ टेक्स्ट। तो अगर हमने बच्चों को कोई, जैसे कि हमारे सीटेट में भी अगर आपको कोई अनसीन पैसेज मिला है, तो आप पहले उसको एक बार जब रीड करते हैं तो आप समझते हैं, हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्या मीनिंग है, क्या मेजर आइडियाज़ हैं इस पैसेज में जो हमें दिए गए हैं, और इस टेक्स्ट को मैं कैसे समझ सकता हूँ अपने प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करके, वो हम करते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसमें कनेक्शंस बनाने लग जाते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है उसमें, जो हम नया सीख रहे हैं उसमें, और ये जो वर्ड्स है, कैसे ये स्टोरी का जो फ्लो है, क्या कोहेरेंस है, वो पूरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू सीइंग द क्वेश्चंस जो हमारे अनसीन पैसेजेस में आते हैं, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ग्रामर रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज का कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मीनिंग वर्ड्स का। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो हमने वहाँ पैसेज से पढ़ा है उसमें कंपैरिजन करना होगा। हमें वो वर्ड्स को क्लासिफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है कई बार। तो कंपेयरिंग एंड क्लासिफाइंग वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स विल ऑल्सो कम अंडर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वुड बी रीजनिंग एंड सॉल्विंग लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर लाइक फैमिली रिलेशंस के बेसिस पे, हमें क्या करना पड़ता है, हमें अगर एक तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कुछ चीज़ें, अगर हमें उसके अलावा कुछ और देखना हो तो उसमें आप कैसे रीजन आउट करेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इट विल डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस। ओवरऑल हमारे जो ये 3 टाइप ऑफ लर्निंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इनके जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, कैसे हम एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको सीटेट के प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे और आपके क्लासरूम्स में भी हेल्प करेंगे। चलिए, अब हम समझ चुके हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारे लैंग्वेज सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लैंग्वेज लर्निंग और दूसरा होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग का जो हमने अभी क्रिटिकल हाइपोथेसिस पढ़ा था, जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस हमने अभी देखा था, उसमें बोला गया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड का जो स्टेज है उसमें बच्चे आसानी से लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और कई तरह के लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, अभी हम अंडमान में हैं 2 दिन से, हमने देखा कि यहाँ के लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं। वो लोग हो सकते हैं किसी भी स्टेट से, बट मोस्ट ऑफ देम नो टू स्पीक इंग्लिश, दे आर ऑल स्पीकिंग इन हिंदी, they have their own mother tongue, and they have also acquired other regional languages which are popular in this region, which is commendable. But if you see that one common thread which is there in all of this is that they are natives, slowly turning natives of Andaman, as they have shifted here or migrated here at a very early stage in their life. तो उन्होंने बचपन से ही जब इतने सारे लैंग्वेजेस का एक्सपोजर था, इसलिए उनके लिए ये लैंग्वेजेस सीखना आसान हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं हमारी टीचिंग में भी। तो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। हमने लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट ऑलरेडी देख चुका है। नाउ लेट अस लुक इनटू लैंग्वेज एक्विजिशन। So what is this language acquisition? When language is learned naturally without any systematic practice, it is called acquisition. ये जो टर्म है लर्निंग एंड एक्विजिशन, दे आर मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट दे आर नॉट द सेम. These learners they can acquire language when they are in their natural environment itself. हमारे लिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? हमारे घर, हमारे फ्रेंड्स, हम जहाँ पे हम उठते बैठते हैं रोज़, वही हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. So the key idea here is language is acquired through constant exposure, interaction, and use in real life situations. Language learning is considered a more planned process, whereas language acquisition, it happens naturally and in our natural process or in our natural habitat. Learning and acquisition, these two are considered as complementary. So learning is usually formal, it is taught in a classroom, it is a conscious process like grammar teaching, specific vocabulary हमारे language set में add करना. Whereas acquisition is a natural process, it happens through exposure and interaction. It is mostly an unconscious process. So with the continuous exposure to a certain language, we will learn the language. Now moving on to specifically when it
Acquisition in general means this. When we come to language acquisition, what does it mean? Language acquisition is the process by which humans acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate. So now language acquisition थोड़ा और specific हो गया. हम लोग languages को किस किस चीज़ों के लिए use करते हैं, हम लोग दूसरों से बात करने के लिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं उसे समझने के लिए और उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए, और जो नए नए वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं. So in language acquisition, there are few important things that we have to remember. So this language acquisition, it involves the capacity of picking up diverse syntax, phonetics, and extensive vocabulary. This happens because you are exposed to this on a day-to-day basis and you are learning it unconsciously. So when the proper context arises, you would see that you are actually using it without realizing it. Then you have not put in separate specific time or effort to learn this, but you have been exposed to it all throughout and इस तरीके से आपने वो language सीखा है या फिर acquire किया है. So this language acquisition में ये language can be vocal with speech or manual as with signs. So languages हम सीख सकते हैं speech के थ्रू भी या फिर signs के थ्रू भी. जब हम छोटे होते हैं तो कई सारी चीज़ें बच्चे अपने पेरेंट्स से एक्सप्रेस करते हैं साइंस के थ्रू, क्योंकि उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है. लैंग्वेज एक्विजिशन, in this concept, it usually refers to the first language, which in most of us, it happens to be the mother tongue or it can be the home language. Then the language that we learn in the schools are considered to be the second language acquisition. It involves both an adult and also a child. So the first language acquisition is usually when we are in the infant stage. As we move on, we learn the second language, and it can happen in adults and also in infants. Now coming to the last aspect of this, the capacity to acquire and use language is a key aspect how humans and other living organisms are differentiated. We can communicate in verbal and non-verbal ways to express whatever we are feeling, and this is how it differentiates us with other living organisms. So if we have to see this whole concept of language acquisition or the distinction between learning language and also acquiring language, we can usually say that language acquisition happens in a natural setting. It happens with constant exposure in our day-to-day life, and also the first language is usually the language that we acquire. It is considered as a home language. So the language acquisition, in short, is a natural process, is what is the key takeaway from this slide. Moving on to the next part. So now we will look into concepts associated with acquisition and learning. So there are various scholars, various language theorists, various psychologists who have spoken about how language learning or learning in general actually occurs. So we will look into that one by one. The first that we would like to discuss is Piaget's concepts. You have heard about Piaget's theories a lot already in your B.Ed, in your other classes you would have learnt about it. So we will just see a little brief of it and then move on and try to understand it in the perspective of language learning. So in Piaget's concept, there are certain important things, which is adaptation, assimilation, and accommodation. He also talks about the classification aspects. So what Piaget said is that learning starts with adaptation, assimilation, and accommodation. He also said that classification was also important in order to learn language. So what happens is when we hear certain words and certain sounds, what we do is we will hear them individually, but in order to remember it better and use it for us, we will try to group them together. Like we ended up having our parts of speech. Then there is this concept of assimilation. So through assimilation, the learner takes the information and changes it to make it more suitable in the context for him or her. So this is what Piaget has spoken about. Now, for an example that I have given here, a child knows what a dog is,
A child then sees a wolf and thinks that it is having similar kind of body structure. So it is having 4 legs, so maybe this is also a dog. But then, when the child realizes that there are certain differences between these two animals, it will understand that the second animal, which is the wolf, is different from the dog. So, what do I call it? And that's when we try to find out, we try to see what are the differences, and based on that, we will label it differently. And then that new vocabulary is also added to our existing vocabulary. So, this is the whole process of assimilation and accommodation. This is how Piaget has spoken about it. Moving on to another important person, the concept that is given by Noam Chomsky. So Chomsky, he talks about the language learning device. He says that we all have this hypothetical tool which is hardwired into our brain, and he has called it the LLD, language learning device. So this particular device, it helps in rapidly learning and also understanding a particular language. So when a child is exposed to languages, we already are hardwired to learn languages, is what he is saying. And he is also stating that we have this innate ability in us to communicate with others. Initially, when we are infants, we will use sign language or various cooing sounds or crying in order to communicate. As we become adults, as we grow over the years, we learn to communicate better, but it is all on the basis of an already existing tool in our brain. He also states that all children are born with the understanding of rules of the language. They simply need to acquire the vocabulary. तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें बात कैसे करनी है, एक लैंग्वेज में क्या रूल्स होते हैं, ये हमारे नॉम चॉम्स्की का कहना है. बट इसके जो हमें यूज़ है, हमें नए वर्ड्स जो ऐड करने हैं हमारे वोकेबलरी में, ये हम धीरे धीरे सीखते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चिल्ड्रन का ग्रामर कैसे हम लोग सीखते हैं. तो द चाइल्ड विल स्लोली नो विच इज़ द करेक्ट ग्रामर to use in various contexts as and when they are picking up the vocabulary. These rules may not be taught in isolation separately, is what he is talking about. So this is Noam Chomsky का concept. Moving on to Vygotsky's concept of learning and acquisition. So लेव वाइगोत्स्की का जो मेन फोकस है वो है सोशल लर्निंग, या फिर सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो हमारा लर्निंग होता है उसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. वाइगोत्स्की का कहना है कि कोई भी लर्निंग जो होती है वो हमारी हो रही है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं. तो वाइगोत्स्की का जो ये ओपिनियन है कि जो लैंग्वेज लर्निंग या फिर लर्निंग इन जनरल जो होता है वो होता है दूसरों से बातें करके. तो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोशल इंटरेक्शन का व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की. सो उनका जो कहना है वो ये है कि कम्युनिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन आवर लर्निंग प्रोसेस, एंड इट ऑल्सो टेल्स अस how we develop culturally and also psychologically. He states that these all cannot happen in isolation. All of this happens in a community. So in other words, we can say that higher mental processes in an individual, they originate, और ये start होता है एक social process से. He has placed a lot of emphasis on role of language in cognitive development. He says that the more social interaction, the more exposure to other people, having to communicate with other people, it will help us all the more to enhance our cognitive abilities as well. The next part that we will be looking into is Pavlov's concept of learning. You would have heard a lot about Pavlov as well. So इनका जो famous experiment है about stimulus and response, जो यहाँ पे image में दिया हुआ है. So basically Pavlov जी ने ये कहा है कि according to him, classical conditioning is a reflexive or automatic type of learning in which a stimulus acquires the capacity to evoke a response that was originally evoked by another stimulus. तो अगर हम इसे आसानी से समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक
स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को आप एक और नए स्टिमुलस से भी एसोसिएट कर सकते हैं। यही था इनके पूरे एक्सपेरिमेंट में, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं। सो दिस प्रोसेस इज that he has spoken about is classical conditioning. It is based on habit formation. So Pavlov was of the view that humans learn due to some stimulus. So when there is some amount of stimulus, the response to it is going to be the learning that we will be having. So एक एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि स्कूल बेल रिंग्स एंड द स्टूडेंट्स नो दैट इट्स टाइम फॉर देम टू लीव. सो फॉर दिस स्टिमुलस of the school bell ringing, the response that the students have is packing up their bags, getting ready to leave school. That is what they are talking about here. So if we look at all these theorists and what they have spoken, one common learning that we can have here is they think that the learning of the child is not limited to just the child alone. It happens in a social context, and also we acquire language through our mental development by having our own innate abilities, and also by social interaction and conditioning that we are exposing them in day-to-day life and also in our classrooms. So this is what we have understood from what all the theorists have spoken about. Now, moving on to the next aspect of our CTET and also language learning and development among the children. तो ये language learning कई stages में होता है. At various stages of our life, we acquire different set of vocabulary which we acquired through a formal learning, or it can be also acquired through the natural exposure to languages. So language learning or language development among children is important for us to understand, because CTET में ये इसमें से भी कई questions कई बार पूछे गए हैं. Communication between people who know each other and also have respect, mutual respect for each other, becomes one of the important factors for developing language among children. The child also needs to learn language in order to understand things around them. So, हमें languages की ज़रूरत है आपस में बात करने के लिए, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसे समझने के लिए, और जो भी हम फील कर रहे हैं या जो भी हम महसूस कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने में भी लैंग्वेजेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. और जिस हिसाब से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वैसे ही हमारा लर्निंग भी उसी के साथ बढ़ता जाएगा. जो भी हमारे पास नए आइडियाज़ या कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो हमें समझने हैं, उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है, और जो हमने सीखा है उसे दूसरों को बताने के लिए भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है. सो ये जो पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चों में, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑल्सो देयर डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनैलिटी, उनका सेल्फ वर्थ उनके हिसाब से, उनका सेल्फ एस्टीम. All of these things will also increase as and when our ability to communicate what we are feeling is getting enhanced. तो ये जो language development है, it is like a journey. हमारे बचपन से लेकर जब तक हम रहेंगे तब तक हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, वैसे ही हमारी लैंग्वेज भी बढ़ती रहती है. तो जब बच्चा पैदा होता है, at the time of birth, slowly the child starts crying, cooing, and also establishing eye contact with their close family members and also with other adults. ये भी एक तरीका है communicate करने का. Another aspect that happens after this stage, when the child is almost reaching 1 or 2 years, it starts giving its first few words or certain sounds, starts calling out ma, papa, amma, all of these words. That is when the language development is now reaching a stage where others can also understand what the child is actually saying. When it comes to 3 to 5 years, they are already in the stage wherein they are using short sentences and also asking us certain questions. So, when they are reaching this particular stage, you can see that children are trying to express, and they will also try to communicate things which they would not have been able to do it earlier. And they are also picking up every day whatever new words you are speaking around them. So it becomes a very important thing to have a strong exposure to various languages in the early years, so that the child का भी vocabulary उसी हिसाब से strong होता रहे.
The next aspect, when it comes to 6+ years, now the children are already capable of reading and understanding, and also to some extent speaking complex sentences. Now, the syntax of it, how did they know which is the right way to speak a particular sentence, ये बातें कई साइकोलॉजिस्ट ने, कई लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने इस बारे में रिसर्च किया है और बहुत कुछ कहा है, बट अभी भी हम पूरी तरह ये समझ नहीं पाए हैं कि छोटे से छोटे बच्चे जो कि 3 साल के, 4 साल के बच्चे कैसे पूरा लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इतने आसानी से सीख लेते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हमारा ये पूरा डेवलपमेंट है लैंग्वेज का, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू आर लेटर चाइल्डहुड एंड मूविंग ऑन इनटू adolescence and adulthood, it is a continuous process wherein we are accumulating new vocabulary and we are talking and expressing, which is helping us to build our relationship and also build ourselves as individual. So now we will look into this language development aspect as the initial stage of language development and then the actual stage of language development, which is what I just spoke to you in short. When it comes to initial stage of language development, it is the desire that we have from the very birth to express what we are feeling. A child's mental health depends on how well they are able to communicate or how much somebody is present for them to be there when they actually want to say something. How well we are able to communicate, how well we are able to understand the needs of the child, that will help them to have a better mental health as well. There are certain words which are most important tools through which a child will learn how to connect to his or her world and also to the family. Through these words is how the child stores information and also expresses their feelings and experiences. Children are very remarkable at picking up certain words and also using it in the right form. This was about initial stages of language development, which usually is an acquisition. Even though parents expose them to various languages, various words, various kind of vocabularies in various contexts, but it is mainly the acquisition of language is what is happening in the initial stages. As the child moves into a more formal setup of schooling, the actual stage of language development starts. So in this stage, what happens is now we are giving them experiences which are focused in order to develop them cognitively and also the social part of their life. So the language development, it starts with oral expression, during which the child will communicate that whatever he or she is feeling. So they learn complex words by listening to other people and they form these sentences while they are expressing themselves. Now that the child is going to the school, they develop the ability to read and write as well. That is why our schooling system is designed in that way. So now when they are being exposed to reading and learning activities, the child will slowly become proficient, and as they develop their language abilities, they are turning into much more knowledgeable individuals, and also it is contributing to the development of their overall personality. So this is an overview about how the language learning happens. When it comes to CTET, I would like to suggest you that there are certain aspects which we have to remember. How this language development is happening, what it is like in the initial stages, और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनका लैंग्वेज लर्निंग की जो क्षमता है वो कैसे बदल रही है, ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान में रखना है हमारे सीटेट एग्जाम के लिए. So coming to development of the vocabulary. In the initial stages, the pace at which the child learns language is rapid. We will not be able to understand how it is happening actually, but as we have seen that there is much more that the child knows is what they are able to express in real at that particular stage. उन्हें जितना आता है वो उतना शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके पास वो सेट ऑफ वोकेबलरी ऑलरेडी है. एंड जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमें पता चलता है कि बच्चों ने जो एक्सपोजर है उसी से इतना कुछ पिकअप कर लिया है, which they are finally now using as they are moving into a more formal setup in order to express themselves and also express whatever they are learning. Now when it comes to vocabulary learning,
In every age group or every stage of the life, the amount of vocabulary that we accumulate is also different. For an example, around 2000 words. So the child reaches the school age, and when it heads to the kindergarten, he or she will already have around 2000 words in their vocabulary. They would have picked it up in the natural environment or an exposure from the parents. So, talking and reading are a very good source of vocabulary development in our children. So, it becomes very important for the teachers, for the parents, and for other family members to actually give the child exposure to new reading material, a lot more awareness about the print, showing them various symbols and signs, and trying to see how they communicate with you, giving them so many opportunities to express themselves. This will help them to succeed in their schooling and also later in life as an individual and also as part of the whole society. Now, the next aspect which becomes important is how do we increase the vocabulary of a child? So, certain tips or certain ways by which we can do is that follow your child's lead, which means that if parents talk about their interest, plus they talk about the child's interest, you give them more opportunity while they are speaking and make sure that पूरा आपका अटेंशन जो बच्चा बोल रहा है उस पर है. When we are listening to them keenly, they would like to talk more. This will help them in increasing their vocabulary. Also, another thing which we shouldn't do is don't bombard the child with new words. There are so many words, there are so many jargons which we can use in our present day lives, but it is not the same with the child. So, what we can do is we should not bombard them with all new words at a time. Slowly, we can build their vocabulary and talk to them in the language which they understand and they will feel more connected to. This is what is more important. And also, the exposure to a particular word or particular language has to be done again and again, which will help them to keep that word and take it to their memory and also know to retrieve it when the time actually comes to use it in a context. So these are certain things that we can remember from the part of language development in children, and the thing which will help in building strong communication and also making a confident child is having a rich language environment at home and at school. So with this, we have come to the end of our content part of the discussion. Now we will look into certain previous year questions and certain questions based on the topics that we have discussed today, certain questions which are important when it comes to our preparation for the CTET examination. Something that I would like to tell you is, हमारे CTET एग्जाम में हमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सभी क्वेश्चंस के लिए हमें ऑप्शंस मिलेंगे, बट ये क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन विच इज़ द करेक्ट आंसर. ये सभी रेस्पॉन्सेज में से वो एक तरीके का क्वेश्चन हो सकता है. कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि ये जो लिस्ट दिया गया है इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है. तो मेक श्योर कि आपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा है और हमारे ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए. और नेक्स्ट एक और तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग. तो आपको एक जो हमारा सेट इस तरफ दिया होगा और एक सेट ऑफ ऑप्शंस जो इस तरह दिए होंगे, आपको देखना होगा किस में प्रॉपर मैचिंग दिया गया है. ये भी एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव मैचिंग अ पर्टिकुलर सेट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. लाइक जैसे हमने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी, तो किसने कौन सी लर्निंग थ्योरीज दी है उसके सारे ऑप्शंस दिए होंगे. इसमें से कौन सा गलत मैच हुआ है, इसमें से कौन सा सही मैच हुआ है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं. तो this is how basically comes from this particular aspect. So usually around 2 to 4 questions will come from this aspect, this particular topic of our language syllabus. Moving on to the first question. So the first question in front of us is, which of the following is a prerequisite to learning a language? जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले उस क्वेश्चन को पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए. प्री-रिक्विजिट which is a requirement for us to learn a language. Prerequisite, pre word का यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, हमें लैंग्वेज सीखने के लिए प्री-रिक्विजिट क्या है. तो हमारे ऑप्शंस हैं मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन एंड ओरल अप्रोच. तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं.
मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन यहाँ पर क्यों करेक्ट है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज को समझने के लिए या भी कुछ भी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें वो सीखने की चाह होनी चाहिए। इट कैन बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इट कैन बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बट मोटिवेशन ज़रूरी है। और बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है, कई बार वो भी हमें हेल्प करता है करेक्ट ऑप्शन को देखने के लिए। हैबिट फॉर्मेशन कैन नॉट बी अ प्री रिक्विजिट. It comes much later when we are continuously being exposed to something and we are forming a habit by doing that, and then we keep on learning more and more. Imitation, we imitate what we are seeing and then also we learn language. But is this a prerequisite? No, it is not. And that is how this option is also wrong. The next one is an oral approach. It is about talking and learning. We can do this also only when we are ready to learn a language, and hence the first option, motivation, becomes the most appropriate one. Now let us look at the second question. ठीक है, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आती है, ये सारे ही पॉजिटिव लग रहे हैं, तो हम कैसे इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो अब आपको क्या करना है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर आप देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, या फिर जो ओवरऑल सारी चीज़ों को कंप्राइज करता है। सो लर्निंग इज लास्ट प्रोसेस, ये तो सही नहीं लग रहा है। इट इज़ एन इंस्टेंट प्रोसेस, क्या एक ही बार में तुरंत ये कुछ हो सकता है। ऑल इंक्लूसिव प्रोसेसेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, ये सही लग रहा है। बट कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, सो लर्निंग इज ऑल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो आपको अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है? मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एंड धीरे धीरे हम लोग एज एंड व्हेन हमारा एज एंड एक्सपोजर इंक्रीज होता है, हम मोर एंड मोर वोकेबलरी को एकोमोडेट करते हैं एंड ऑल्सो उसको यूज करते हैं हमारे रियल लाइफ में। Coming to the third question, which one of the following is considered as a great deterrent to learning English? First, lack of opportunity for the pupils to listen and use English outside the classroom. English is a difficult language to learn. English phonemes are unscrupulous. English has a vast vocabulary. Now, as you can see, इसमें से हमें choose करना है great deterrent to learning English, which is like a hindrance, which will lead to language not being developed in the manner that we would want. So that is what they are asking us here. Clearly, there are certain options which we can eliminate. English is a difficult language to learn. We can eliminate that. English phonemes are unscrupulous. We are open to learning English language, and so we needn't say it like that. So we will remove that particular option also. The next one is English has a vast vocabulary, which is true, but is it a great deterrent to learning English? No. So the correct option will be option 1. Coming to the fourth question, language acquisition can be automatically attained. This statement is favored by whom? So we have heard a lot of learning theories which were given by cognitivists, certain behaviorists. Is it true for both 1 and 2, and the fourth one, none of the above? As you can see, this is a different pattern of the question. So while you think of the answer, the correct answer here will be the one which talks about language acquisition can be automatically attained. So the correct answer here becomes cognitivists. The next question is, language acquisition occurs only when the child is taught the rules of the grammar, the child is given an award, the child has exposure to language, the child absorbs the language without conscious attention. So here मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस मुझे कुछ सही लग रहे हैं, 3 and 4, बट मैं
दोबारा जब क्वेश्चन की तरफ देखती हूँ वो हमें पूछ रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, एंड जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ मोर ऑफ अ नेचुरल एंड अनकॉन्शियस process. So the correct option here would be the fourth option. Coming to the next question, which is mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom by using the mother tongue more often, giving examples from the mother tongue, giving a lot of exposure in the target language, giving inputs from the targeted language in a simple and graded manner. So here we have four options with us, and it is talking about the mother tongue. So we have seen that all of us have certain influence, certain amount or to certain degree from our mother tongue, which is influencing our learning of other languages also. So in a classroom, how do we minimize the influence of mother tongue? So here the correct option would be giving inputs from the target language in a simple and graded manner. This becomes the most appropriate here because we are trying to reduce the influence of mother tongue. So option 1 is eliminated there itself, using the mother tongue more often, वहीं पे eliminate हो जाता है. जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो भी मदर टंग को कैसे एनहांस करना है उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 भी बाहर हो गया है. गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज सीम्स लाइक द राइट आंसर, but when we look at the fourth option, giving inputs from the target language in a simple and graded manner. Graded manner is talking about how you increase the level of learning or the level of difficulty gradually. So this becomes the most appropriate option here. Next question. A child has to use higher order of mental processes such as intelligence or reasoning in which type of learning? So while we were discussing the concept of learning, we looked into three things. There are three types of learning that occurs. So from that you have to choose which is the most appropriate one here. So one option which we can readily remove out is speaking because it is not a type of learning. Now we are left with motor skills, concept learning and verbal learning. Now the highest order which is involving reasoning ability and also intelligence is only one of the option here, which is the concept learning. So the correct answer here will be the concept learning. So the next question here is a different model that we can see from all the questions that we were looking at till now. So they have asked which of the following is not correctly matched. So in this question, there are two things that we have to see. First, they have asked not correctly matched. So you have to match and then checked which one is not correctly matched. So let us look at the options. We have B.F. Skinner talking about language learning device. जहां तक मुझे याद है ये तो दिया था नॉम चॉम्स्की ने. नेक्स्ट वन Pavlov's theory of classical conditioning, and the third one Chomsky theory of operant conditioning. As you can clearly see from the very first option, we can make out that A is not correctly matched and C is not correctly matched. So now let us look at the options. Only A and B, A and C, and B and C. So clearly the right answer here becomes A and C. So the next question in front of us is state which is not true in the context of learning and acquisition. So now we are talking about both learning and acquisition. So acquisition is a natural process. Learning is a continuous process. Learning results in subject proficiency. Acquisition helps in cognitive abilities. So here what they have asked is not true in the context of learning and acquisition. So they have given us various statements. इसमें से हमें देखना है कौन सा not true है in the context. So acquisition is a natural process, which is true. So if the first option is true, when we see the other option talking about acquisition help in cognitive abilities, but when we think about it, it is helping us to develop things naturally. The cognitive abilities come much later slowly. So here the correct answer, which is the statement which is false, is acquisition helps in cognitive abilities. Now the next question is
From the given factors, which one may not affect learning outcome? Again, we are asking may not affect the learning outcome. आपके सामने जो चारों options दिए हैं उन्हें देखिए. Learners' motivation and interest, structure and size of classroom, teachers' personality and altitude, parents' income and status. So ये चार options हमारे सामने दिए गए हैं. इसमें से हमने जो factors influencing learning देखे थे, that concept is what is asked here. So we remember that teacher का role बहुत important है, learner का motivation भी बहुत important है, and the environment and the learning setup is also important here. Coming to the fourth option is what makes us feel that this is the correct. Coming to the fourth option, parents' income and status. This happens to be the most appropriate answer here because parents' income and status may not directly affect the learning outcome, and that is how it becomes the most appropriate answer here. But I would like to tell you that there are researches, there are discussions that have spoken, but I would like to tell you that parents' income and status is also one of the factors which affects learning outcome, but may not be as promptly जितना effect हमारे बाकी जो यहाँ पे factors list किए हैं उतना fourth वाले option का नहीं है. इसलिए यहाँ पर ये सबसे correct बन जाता है. But there have been immense amount of research which has shown that the socio-economic status, parents' income and status also affects the child's learning outcome. But हमारे इस question में correct answer होगा हमारा fourth option. The next question that we have in front of us is which one of the theory based on the habit formation says that humans or any creatures give response due to stimulus or human learn due to stimulus. Now, if you try to remember, we were discussing about stimulus and response theory. So, to a particular stimulus, a particular response is given. This has been spoken about in which particular theory? This is a very direct question. So the correct answer here becomes classical conditioning. अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है when the students learn a language for bright employment opportunities, their motivation is. So now this particular question is being asked from the motivation concept. It can be extrinsic or intrinsic. These are the two kinds of motivation that the learners actually have. So if you look at that, we can remove two of the options immediately, the first option and the fourth option. Now we are left with two other options, extrinsic and intrinsic. So if you look at what is being said in the question, language for bright employment opportunity. This is something that is outside an individual's motivation. It has to be an extrinsic factor which is affecting the child's learning for a language. So this motivation will happen to be an extrinsic motivation. Option 2 will be the correct answer here. Now looking at the next question, the process of word formation consists of spelling and compounding, using synonym or euphemisms, compounding and conversion, conversion and meaning. तो वर्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन से दो चीज़ें होंगी, उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? तो उस प्रोसेस के अंदर स्पेलिंग्स क्या हो सकता है? नहीं. विल इट टॉक अबाउट सिनोनिम्स? वर्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ. And the last option, if you see, conversion and meaning. It is talking more about how we understand. It is not talking about the formation of the word. So the correct option here would be compounding and conversion. Next question जो हमारे सामने है, which learning domain constitutes higher order thinking? So this concept you would have also learned in child development and pedagogy, but to just answer it here, the higher order thinking will come under only two aspects which can make it little confusing for us. Is it application or evaluation? क्योंकि remembering or understanding is considered one of the initial parts when it comes to learning domain development or thinking development. So the
थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से अगर हमें चूज करना होगा तो एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। दिस इज ऑल्सो अनदर वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. दिस question is a fill in the blank question. So providing students dash can encourage second language acquisition. Frequent feedback on spoken and written outputs, informal interviews, adequate speaking and writing assignments, the opportunity to voice their opinions and to solve problem in the target language. यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें लगभग सारे ही ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन वन ऑफ द ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो even though we know that most of these answers or options are correct, there is only one most appropriate answer, and that would be the opportunity to voice their opinions and to solve problems in the target language. All the other options are also correct. They will encourage the second language acquisition, but not as much as the fourth option. That is why it becomes the right answer here. The next question, generally speaking, the first language is marked by the accent and regional expressions of the area where students grow up, influenced by the grammar and style of second language, marked by the characteristic difficulty in mastering it, marked by the influences of the school environment the child is studying in. So ये चारों ऑप्शंस में से फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा रहेगा? हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था, मदर टंग लैंग्वेज इन्फ्लुएंस. सो इफ यू remember that particular concept that we discussed, we know there is a lot of influence of the mother tongue on our language learning. Because of this aspect, the first answer is the most appropriate one here. So the next question, language learning is better achieved if what students learn is functional in terms of their life values and goals, is in a controlled classroom environment, is closer in form and sound to their mother tongue, helps them improve their chances of college admission. So we have four options in front of us, but हमसे क्या पूछा गया है इस सवाल में? लैंग्वेज लर्निंग को हम कैसे आसानी से या फिर कौन हमें बेटर अचीव करने में इन्फ्लुएंस करेगा, ये सारे जो सिचुएशंस है उसमें से. सो इफ यू सी, सेकेंड ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इज इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरमेंट. Language learning cannot actually occur in a controlled classroom environment. A conducive classroom environment will definitely enhance language learning, but will it actually happen in a controlled classroom environment? I am not sure. And because of that, the second option is eliminated, leaving us with other options. Now look at the third option. It's closer in form and sound to their mother tongue. Learning is better if the language is closer. It is true. Now let us see the other options. Helps them improve their chances of college admission. Learning language is better achieved if what students learn helps them improve their chances of college admission. This is talking about motivation aspect, but does it actually directly contribute here? No. So looking at all of these, the most appropriate answer will be is functional in terms of their values and goals. Next question in front of us is, students always find it difficult to listen to and understand a second language presentation inside or outside their class. This can be helped by. So जो सेकेंड लैंग्वेज है वो सीखने में बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जब वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. It happens inside the classroom also and outside the classroom, which is very normal and very likely. So what can we do? This can be helped by. So हमारे पास जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन 1, recommending to choose another language closer to L1. Should we do that? I don't think we should do that. Being taught by only native speakers of L2. Third option, increasing the number of periods for the second language. क्या ये सही है?
Now the next option, practice by using the second language more. If we see here, the first and fourth option is what seeming to be the most appropriate answers. Now what we have to do is we have to choose between these two, which happens to be the most appropriate here. So practice by using the second language more will be the correct answer here. The next question in front of us is, the acquired system or acquisition of a language is the formal skill development, subconscious process of learning, input-output process, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग. ये चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि एक्विजिशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक और क्वेश्चन भी डिस्कस किया है. सो द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन व्हेन इट कम्स टू लर्निंग and also specifically to language learning happens to be a subconscious process of learning. So the correct option here is option 2. Coming to the last question of our discussion for today, one of the objectives of teaching vocabulary is not to, read the question carefully, the objective of teaching vocabulary is not to be able to use words in different contexts, develop active and passive vocabulary, enable learners to use the dictionary, understand the meaning of the words. So the teaching of vocabulary and the objectives of it is what we have to remember here. With what intentions do we teach vocabulary? It is actually done so that we can use various words in various contexts wherever it is most appropriate. It is also done to develop active and passive vocabulary. It is also done for us to better understand what is being spoken to us and what we want to express. So the correct option here, which is talking about not to, is enable learners to use the dictionary. With this, we come to the end of our discussion for today, and these were some of the sample questions. We will meet again in our further discussions and make sure कि हमारा CTET का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहा है. Thank you so much.